Hello and welcome to the series Iconology and Temple Architecture Perspectives by Dr. Anil Joshi. Today's lecture is going to be on Durga Temple Aiholi. As you know, Aiholi is considered as a cradle of the temple architecture. You will see development of temple architecture from stone cut to the rock cut to the standing structural temples. All this development has taken during the period of Chalukyas, and all the evidences you can see here. You can visit different temples and you can get different varieties of temple. There are a lot of experimentation were carried out, and ultimate result was at Pattatkal. But here in Durga Mata temple, we are going to see what was the difference, why it is called a different temple by other temples, and in which way it resembles other temples. So both similarities as well as differences we are going to see. Let's get going to the topic, that is Durga temple, Durga Mata temple, or Durga temple Aiholi. Why Durga temple? Because there was a fort near this temple. Actually the temple is not of Durga Mata. It is Durga temple because it is near the fort. So this is the map of the complex, the temple complex, where there are multiple large temple, small temples, some are named, some are not named, and two wells. All are well engineered, well carved, and a beauty by itself. So let's get going to the topic and more details about the Durga temple. It was the early morning for us. We are there at sunrise, and it was a beautiful morning. Now, before understanding what is the difference in architectural details, we have to compare two beauties here in the complex. One thing is Larkhan temple, which is on left side, and this is the Durga Mata temple. Now, if you see, we are going to see each and every detail of it. But you will see one thing is this portion of the temple is curved. Number one. Number two, this is one parikrama marga and this is second parikrama marga. Number two. And number three, if you see the temple designing, it is slightly different than other temples. We'll see step by step what does it really mean. Let's get going to the detail. These are the information given by archaeology department. One must read it before starting the sightseeing. Now this is a big complex. When there are lot of temples, you can visit them. It will take a long time. So what we decided was to take a videography and photography and to analyze it later to find out what are really its specialities, in which way it differs from other temples. इस गांव का नाम ऐहोले है सर। इस गांव का नाम ऐहोले बोलते सर। इस गांव में चालुक्य महाराज ने रूल करते सर। चालुक्य का काल मान 5th to 8th सेंचुरी है सर। 5th to 8th सेंचुरी मतलब चालुक्य राजा पहले 6th to 7th सेंचुरी बाधा में ऐहोले में शासन किया सर। 5th to 6th सेंचुरी तक 6th to 7th सेंचुरी बाधा में 7th to 8th सेंचुरी पट्टदकल सर। पट्टदकल में एंड किया, लेकिन उस टाइम पे इधर मंदिर बना है सर। इधर 120 मंदिर है सर। इस गांव में 120 टेम्पल है सर। सर एक ही गांव में इतना सारा मंदिर क्यों बना है सर? क्योंकि इधर एक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था चालुक्य जमाने में।
स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। लेकिन उस टाइम पे इधर मंदिर के बारे में और मूर्ति के बारे में स्टडी करने के लिए लोग आते हैं सर इधर, इसलिए वो 120 मंदिर अलग अलग स्टाइल में मॉडल बनाए सर, मतलब प्रयोग किया है। ये एक आर्किटेक्चर का एक्सपेरिमेंट जगह है सर चालुक्य का, इसलिए ये ऐहोले में फर्स्ट प्रयोग करते थे। बाद में बादाम में थोड़ा उसका डेवलपमेंट किया सर, पट्टदकल में उसका परिपूर्ण किया सर चालुक्य राजा। हाँ, इसलिए ऐसा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है सर। सर उस टाइम पे इधर 120 मंदिर बनाए सर, ये चालुक्य जमाने में 120 टेम्पल। 120 टेम्पल अभी भी देख सकते हैं सर आप। ऑल टेम्पल अलग अलग स्टाइल में बनाए सर, अलग अलग स्टाइल है। लेकिन ये टेम्पल देखिए सर, ये एक यूनिक स्टाइल है। देखिए सर, ये एक बुद्धिस्ट स्टाइल में, बौद्ध चैतन्य स्टाइल में। देखिए सर, वो एक पीछे से देखेगा तो थोड़ा हाथी जैसे पीछे जैसे दिखाई देते थे सर, और आगे है स्क्वायर में सर। लेकिन एक यूनिक स्टाइल, एक्चुअली हिंदू टेम्पल स्क्वायर में रहते सर, स्क्वायर में। ये टेम्पल देखिए सर यूज टाइप में है, इसलिए कि एक यूनिक स्टाइल है सर, अलग अलग स्टाइल में प्रयोग किया है सर। सर ये देखिए सर टेम्पल, इसको हम बौद्ध चैत्यालय और गजपृष्ठ शैली बोलते सर। गजपृष्ठ शैली, देखिए गज मीन्स एलिफेंट सर, उसका बैक साइड थोड़ा इंग्लिश अल्फाबेट यूज जैसे रहता है ना, इसलिए ऐसा यूज जैसे है सर। लेकिन इस टेम्पल का नाम है सर दुर्ग टेम्पल। अभी दुर्ग बोलते सर। दुर्ग मतलब नॉट गॉडेस, दुर्गा माता का मंदिर नहीं है सर। दुर्ग किला, किला, ये किला का सामने है सर टेम्पल, इसलिए दुर्ग बोलते हैं सर। ब्रिटिश जमाने में थोड़ा नाम चेंज हो गया सर, लेकिन ब्रिटिश लोगों को मूर्ति के बारे में और टेम्पल के बारे में कुछ पता नहीं था ना, इसलिए एक बार सर्वे किया सर ब्रिटिश लोग। उस टाइम मंदिर में गरीब लोग रहते थे, इस गाँव का गरीब लोग, लेकिन वो गरीब लोगों का नाम दे दिया टेम्पल सर। अभी देखिए सर, इसको दुर्ग बोलते हैं। और एक टेम्पल है सर लार्ड खान, बाद में दिखाऊँ। लार्ड खान मतलब एक मुस्लिम आदमी सर, मुस्लिम आदमी उधर स्टे करते हैं, तो उधर सर्वे करने के लिए सर उसका नाम पूछ के लार्ड खान टेम्पल नाम देते हैं सर। और एक टेम्पल हुच्चीमली सर, बाहर आते हैं हुच्चीमली बोलते हैं। हुच्ची मीन्स पागल सर, उसके नाम मल्ली उधर स्टे करते थे, उधर गए सर, उसका नाम पूछते उच्ची मल्ली नाम लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में मेंटल मल्ली, म्याड मल्ली टेम्पल लिखा है सर। अभी कन्नड़ में हुच्ची मल्ली बोलते हैं, इसलिए हुच्ची मल्ली टेम्पल है सर। देखिए अभी भी वो दोनों टेम्पल में जाकर देखिए सर शिवलिंग है सर। वो दोनों टेम्पल है, शंकर भगवान का टेम्पल है, लेकिन ब्रिटिश लोगों को वो मूर्ति के बारे में और टेम्पल के बारे में कुछ पता नहीं ना, इसलिए ऐसा नाम दे दिया सर। उसी तरह इसको दुर्ग टेम्पल सर। दुर्ग मतलब किला, हाँ। गुड़ी मतलब टेम्पल सर, दुर्गुद गुड़ी बोलते थे। बाद में ब्रिटिश लोग अंग्रेज ने क्या किया सर, दुर्ग टेम्पल लिखे हैं, इसलिए दुर्ग टेम्पल दुर्गा टेम्पल हो गया सर। लोकल लैंग्वेज में मिस्टेक, दुर्गा टेम्पल बोलते हैं, लेकिन नॉट दुर्गा टेम्पल। ये 8th सेंचुरी के टेम्पल है सर। 8th सेंचुरी में सेकेंड विक्रमादित्य राजा ने इसको बनाया, निर्माण किया है। लेकिन ये टेम्पल थोड़ा यूनिक स्टाइल यूज टाइप में है, और गर्भगृह, सभा मंटप, मुखा मंटप, प्रदक्षिण पथ सब इसमें देख सकते हैं। अभी अंदर गर्भगृह में मूर्ति नहीं है सर। अच्छा। उस मूर्ति को लड़ाई में थोड़ा इसको तोड़ दिया सर, डिस्टर्ब किया, लेकिन अभी मूर्ति नहीं है सर। अभी अंदर देखिए, यहाँ से चालुक्य जमाने में इस गांव को आर्यपुरा बोलते थे सर। आर्यपुरा, आर्य मीन्स कॉलर सर, पुरा मीन्स सिटी। चालुक्य जमाने में आर्यन लोग ज़्यादा रहते सर इस गांव में, पंडित लोग, इसलिए आर्यपुरा, आर्य ग्राम बोलते थे। अभी रिसेंटली इस गांव में लोकल लोग ऐहोले बोलते सर। ऐहोले क्यों बोलते सर? ये ऐहोले नाम के बारे में एक कहानी बोलते सर, एक मैथोलॉजी स्टोरी सर। रेणुका देवी और जमदग्नि महर्षि पता ना? रेणुका देवी और जमदग्नि महर्षि का पुत्र परशुराम सारे क्षत्रिय जनरेशन को मार रहे। मारने के बाद परशुराम को थोड़ा पाप जैसे लग गया सर, पाप। उस पाप से पवित्र होने के लिए परशुराम इस गांव पर आता है सर। इस गांव से 1 किलोमीटर दूर एक नदी जाती है सर, मलाप्रभा रिवर। उस नदी में परशुराम अपने वहाँ आयुध परशु नदी में साफ किया सर, तब सभी पानी लाल हो गया सर। उस टाइम पे इस गांव का औरत लोग पानी लाने के लिए, कपड़े धोने के लिए नदी पर गए सर। उस लाल वाला पानी देखकर सब औरत लोग डर गए सर।
डर जाके एक आवाज़ करते अयो हड़े अयो हड़े सर सर अयो मीन्स एक सरप्राइज Expression. हाँ एक्सप्रेशन सर हड़े मीन्स नदी सर अयो हड़े हो गया अयो हड़े हो गया लेकिन एक मैथोलॉजी स्टोरी है लेकिन चालुक्य शिलालेख में इस गाँव को आर्यपुरा लिखा है आर्यपुरा सर इस टेम्पल में एक गर्भगृह अंदर है सर गर्भगृह सभा मंडप एंड मुखा मंडप तीन वास्तु भाग है और गर्भगृह के साथ एक परिक्रमण प्रदक्षिण पथ और एक बाहर है सर देखिए सर ये गर्भगृह के साथ प्रदक्षिण पथ है ना उधर ओनली राजपरिवार घूमने के लिए ओनली राजपरिवार सेकेंड मंत्री पंडित लोग बाहर और पूरा बाहर कॉमन मैन और ये टेम्पल में थोड़ा गर्भगृह एंड सभा मंडप में विदाउट कार्विंग सर ज़्यादा कार्विंग्स नहीं है लेकिन बाहर मुखा मंडप में ज़्यादा कार्विंग्स बना है देखिए सर इधर थोड़ा ब्यूटीफुल मूर्ति डिजाइन बना है देखिए ये डोर देखिए सर एक इम्पोर्टेंट डोर है सर उड़ान जैसे बना है इसमें देखिए जो मूर्ति डोर में एक ही सिंगल पत्थर है सर एक साइड में इसमें 5 डिजाइन बना है सर हम उसको पंचशाखा करते हैं पंचशाखा मीन्स 5 ब्रांचेस सर फर्स्ट वन है स्नेक जैसे है देखिए सर स्नेक जैसे उसको हम नागशाखा कहते हैं नागशाखा सेकेंड वन थोड़ा फ्लावर जैसे है सर इसलिए उसको पुष्प शाखा थर्ड वन स्तंभ शाखा ये नरा शाखा और बाहर मकर शाखा ऐसे टोटल 5 है और नीचे दोनों साइड में द्वारपालक है सर द्वारपालक का और होली नदी का पवित्र नदी का इमेजिनेशन है सर गंगा एंड यमुना नदी का इमेजिनेशन बना है यहाँ पे गंगा खड़ी है यहाँ पे यमुना है सर ये गंगा और यमुना हमको कैसे पता चलता है देखिए सर हिंदू ग्रंथ में ऑलरेडी लिखा है सर यमुना का व्हीकल क्रोकोडाइल है गंगा का व्हीकल गंगा का व्हीकल क्रोकोडाइल यमुना का व्हीकल काछुआ है यहाँ पे से पता चला और गंगा यहाँ पे नीचे देखिए क्रोकोडाइल के ऊपर खड़े सर ये क्रोकोडाइल है नीचे वहाँ पे यमुना है सर वो काछुआ के ऊपर खड़े हैं इसलिए गंगा यमुना बोले रोड इमेजिनेशन देख और बाहर एक सिंगल औरत है और ये दोनों मिथुन दंपति सर दोनों ही सर बादा में आर्किटेक्चर टेम्पल में मिथुन दंपति ज़्यादा है अलग अलग स्टाइल में अलग अलग मूड में खड़े रहते हैं और ऊपर गरुड़ सर स्नेक के साथ गरुड़ है सर ऊपर विष्णु भगवान का वेकर होते गरुड़ और ऊपर देखिए सर आदिशेष बोलते आदिशेष शेषनाग सर आधा मानव रूप और आधा स्नेक रूप में है सर बाजू नाग कन्या का है और इधर मत्स्य यंत्र है सर यहाँ पे मत्स्य यंत्र मतलब मछली के डिजाइन मतलब इसको महाभारत में अर्जुन में वो द्रौपदी स्वयंवर में पानी में देखे मछली को वो बाण मारते उसको मत्स्य वेद यंत्र करके देखते हैं इसलिए मत्स्य वेद यंत्र जैसे देखते ऊपर और विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार है सर आर्किटेक्चर शुरू होता है ऐहोले में से फर्स्ट ऐहोले में शुरू हुआ और उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो बादामी में और परिपूर्ण हो पत्थर सर ये 4 पिलर देखिए सर थोड़ा ऐसा डेवलपमेंट कैसा हुआ देखिए सर ये पिलर देखिए सर थोड़ा सिंपल है पिलर प्लेन है देखिए सर विदाउट कार्विंग थोड़ा ज़्यादा कार्विंग नहीं है सर इसमें और ये सेकेंड पिलर में देखिए सर 2 साइड कार्विंग है और 2 साइड थोड़ा अपूर्ण है सर सिंपल इसलिए थोड़ा डेवलपमेंट हो सर और इधर देखिए सर पूरा ऊपर से नीचे है सर हाँ पूरा नीचे है और इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट थोड़ा ये फिनिशिंग कम है सर फिनिशिंग कम है देखिए गंधर्व दंपति डिजाइन देखिए सर अपूर्ण है लेकिन ये देखिए सर ये पिलर में बहुत परफेक्ट है सर ये पूरा परिपूर्ण है सर इसलिए आर्किटेक्चर में थोड़ा डेवलपमेंट होता है सर कैसे है कि ऐहोले प्राइमरी स्टेज सर ऐहोले प्राइमरी ऐसा बादा में हाई स्कूल कॉलेज पट्टदकल्ला यूनिवर्सिटी बेलूर है स्टेप बाय स्टेप Belur is the last one finest so this represent Belur जैसे ये थोड़ा ऐहोले प्राइमरी जैसे Aiholi primary stage ये बादा में हाई स्कूल स्टेज Badami still next stage high school stage कॉलेज पट्टदकल स्टेज
Pattadakal is this, still further development. यस सर ये बेलूर अड़ेबेलूर वो 10th सेंचुरी के बाद वैसा होगा Yes, correct. थोड़ा डेवलपमेंट किया सर इधर अच्छा दिखाया उन्होंने सभी स्टेप वाइज. स्टेप इसलिए क्या आइडिया दी और ये कक्षा सर सोफा सेट है सर बैठने के लिए यहाँ पे थोड़ा राजपुर बैठने के लिए अपना वहाँ पे थोड़ा मंत्री लोग सर स्टेप बाय स्टेप और कॉमन पीपल्स Outside, yes, yes, yes. परिक्रमा. सर उस टाइम का मैटर क्या ही लगता है. लेकिन उस जमाने में सीमेंट नहीं था सर करेक्ट. इसलिए वो पिलर के अंदर और थोड़ा ये Interlock इंटरलॉक के करेक्ट करेक्ट. ऊपर पिलर ऊपर विष्णु भगवान का फोर्थ इनकारनेशन है सर Yes. इसको भक्त पलक का वो जमे नरसिम्हा. नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को वध करा Yes, yes, correct. मार और एक उधर है वो में सुरपान दंपति बोलते सर वो ऊपर में अच्छा. सुरपान दंपति बोलते हैं सुरपान मीन्स ड्रिंक एंड कपल सर उस जमाने में थोड़ा स्त्री पुरुष दोनों अल्कोहल पीते सर उधर दोनों मेंटेन है सर ऊपर देखिए दोनों मेंटेन है सर लेकिन पूरा गया सर नीचे गिर जा रहा है वो पुरुष है और उसके असिस्टेंट मदद और नीचे बाद में वॉमिटिंग करते नीचे कुत्ता है कुत्ता वो वॉमिटिंग का है और उस जमाने में चाल के जमाने में थोड़ा ग्लासेस नहीं रहे वो एनिमल क्रशिंग एनिमल हांस लेकर हांस में डालकर वो लोग शराब पीते थे तो हांस से डिजाइन बनाई गई थी. अच्छा. Yes. तो देखिए थोड़ा देखने के लिए थोड़ा गर्लफ्रेंड कपल सर लेकिन उससे एक मैसेज दिया था चालुक्य के इसमें मैसेज क्या है सर वो देखिए सर वो उसकी बैलेंस पूरा खो गया ना और उसकी ड्रेस भी नीचे गिर गया सर नीचे ड्रेस भी गिर गया तो पूरी इज्जत खो जाती है करेक्ट. और गौरव नहीं रहता और वॉमिटिंग है सर वॉमिटिंग हेल्थ खराब हो इसलिए वो वॉमिट किया सर इसलिए शराब मत पीजिए. करेक्ट. मैसेज एक मैसेज सर मैसेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो अल्कोहल पे जाएगा. तो Yes. ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पे ऐसा हो जाएगा हमारा इज्जत भी खो जाता है और हेल्थ भी खराब होती है इसलिए ऐसा ज़्यादा मत पिए. चलिए ये सेकेंड प्रदक्षिण है सर परिक्रमण और यहाँ पे भी मूर्ति था सर इसको तोड़ दिया मूर्ति काले देव कोष्टक का बोलते हैं देव कोष्टक आगे है सर आगे एक शिव शंकर भगवान का मूर्ति है. अच्छा. देखिए यहाँ पे शंकर भगवान है सर शंकर भगवान इधर पहले हाथ में सीता पलक पकड़ा सर पकड़ने और ऊपर देखिए सर और दूसरा हाथ में रुद्राक्षी और डमरू वेलु नाग परशु पकड़ के त्रिभंग में खड़ा है सर त्रिभंग में खड़ा है लेकिन शिव का वाहन नंदी सर इधर नंदी है और टाइगर स्किन पहना है देखिए सर शिव शंकर भगवान इसलिए व्याघ्र चर्मधारी बोलते हैं व्याघ्र चर्मधारी और नीचे गना है सर शिव का असिस्टेंट गण शिव गण घना नंदी को थोड़ा मजाक कर रहा है सर थोड़ा शिल्पी इमेजिनेशन इमेजिनेशन है सर कैसे है ऐसा पूंछ खींच रहा है इसलिए वो नंदी पे गुस्सा है गुस्सा से देख रहा है इसका एक्सप्रेशन देखे सकते हैं एक्सप्रेशन इमेजिनेशन वो शिल्पी का फीलिंग क्या है वो इसमें दिखा है सर वो नंदी में हाथ में देखे थोड़ा कैसे गुस्सा आया गुस्सा से देख रहे हैं. और नेक्स्ट इधर हैप्पी नरसिम्हा सर
हैप्पी नरसिम्हा बोलते हैं इसको, विजय नरसिम्हा। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद सर, नरसिम्हा अवतार में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद विष्णु भगवान खुश हो जाएगा सर, हैप्पी होता है, इसलिए हैप्पी में कड़ा है सर इधर, इसलिए हैप्पी नरसिम्हा विजय नरसिम्हा बोलते हैं सर। देखिए लायन पेस है लेकिन हैंग्री नहीं है सर, हंस रहा है और स्माइली है, देखिए स्माइली है, और हाथ में गदा था सर, टूट गया, गदा था टूट गया, इसलिए हैप्पी नरसिम्हा विजय नरसिम्हा। सर इधर विष्णु भगवान मूर्ति है, स्टैचू, लेकिन विष्णु भगवान यहाँ पे अवतार में नहीं है साहब, सिंपल है, असली रूप में है, विष्णु भगवान असली रूप में है, हाथ में शंख चक्र है, और यहाँ पे विष्णु भगवान का व्हीकल गरुड़ है सर, गरुड़ है, गरुड़ के ऊपर बैठा है विष्णु भगवान, बाजू उसका पत्नी लक्ष्मी है सर, लेकिन सिंपल है सर, अवतार में नहीं है, इसलिए गरुड़ नारायण बोलते हैं इसको, गरुड़ नारायण विष्णु। सर देखिए सर, एक गर्भगृह प्रदक्षिण पथ राउंड है, देखिए सर, एक्चुअली हिंदू टेम्पल स्क्वायर में रहता है सर, इसलिए थोड़ा राउंड है, एक बौद्ध चैत्यालय मतलब स्तूप जैसे राउंड है सर, इसलिए बौद्ध चैत्यालय जैसे, बौद्ध चैत्यालय। इधर भी एक मूर्ति था सर, निकल गई है, और ये विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है, वराह अवतार, वराह मीन्स पिग, वाइट बोर्ड सर। विष्णु भगवान को दो पत्नी है सर, एक लक्ष्मी और एक भूदेवी सर, पृथ्वी देवी को हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्यक्ष राक्षस ने पाथर में रखा है, पाथर में छुपा रखा है, इसलिए पाथर से भूदेव को हेल्प करने के लिए वो विष्णु भगवान तीसरा अवतार बन गया, वराह अवतार करके पाथर में जाकर पाथर में हिरण्यक्ष को मार डाल के भूदेव को अपने कंधे पर उठा ले गया सर। विष्णु भगवान पातालोक से ऊपर आ गए सर, लेकिन विष्णु भगवान को थोड़ा हेल्प करने के लिए दोनों नाग दंपति मदद करा, थोड़ा दोनों नाग दंपति सर, नागा नागिनी बोल सकते, लेकिन ऊपर आने के लिए थोड़ा मदद करें, हेल्प करें, ये विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है। सर ये महिषासुर मर्दिनी सर, महिषी मतलब बफलो, महिषासुर मर्दिनी बोलते, देखिए महिषासुर मर्दिनी, महिष मीन्स भैंसा, असुर मीन्स राक्षस सर, और मर्दिनी मीन्स मारने वाले सर। इधर महिषासुर को दुर्गा माता चामुंडी अवतार करके मार रहे, देखिए सर, ये महिषासुर है बफलो रूप में, इसको महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा माता को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हेल्प करते सर। देखिए सर, यहाँ पे देवी 8 हैंड्स है, देवी को 8 हैंड्स 8 हैंड्स है, लेकिन वो साइड में 4 है, ये साइड में 4 है सर, लेकिन 3 इधर टूट गए सर, 3 है और एक ही है सर इधर, और उधर 4 हाथ है, देखिए सर, एक हाथ में एक अस्त्र है सर। देखिए सर, फर्स्ट हाथ में देवी का अस्त्र तलवार आता है, इसलिए तलवार है, थोड़ा टूट गया सर तलवार। सेकेंड हाथ में ब्रह्म का अस्त्र कमल है सर, ब्रह्म का अस्त्र कमल है, और सेकेंड हाथ में विष्णु भगवान का अस्त्र चक्र है सर, चक्र, और फोर्थ में शिवा का अस्त्र त्रिशूल है सर। इधर दुर्गा माता त्रिशूल से मारे सर महिषासुर, इसलिए महिषासुर मर्दिनी चामुंडी अवतार बोलते हैं, चामुंडी अवतार करके महिषासुर को मर्दन, और हाथ में रक्षा कवच देखिए सर, सेफ्टी के लिए रक्षा कवच है, क्राउन है। देखिए सर, चामुंडी अवतार कैसे रहते हैं, बहुत हैंग्री रहते सर, बहुत गुस्सा में रहते हैं, लेकिन इधर थोड़ा गुस्सा में नहीं है सर, स्माइली है सर, क्योंकि थोड़ा सिर्फ एक इमेजिनेशन अलग है, इसलिए स्माइली से बनाया सर। अच्छा सर, ये हरिहरा होता है,
हरी एंड हरा दोनों एक ही पत्थर में है। इधर हमको कैसे पता चलता देखिए, ये साइड में विष्णु भगवान का रूप है सर। हाँ, हमको विष्णु भगवान कैसे पता चलता है? विष्णु हाथ में शंख का चक्र है सर, शंख चक्र है। और वो साइड में शिव का हाथ में त्रिशूल था सर, हाथ टूट गया। ऊपर पार्वती सर वो साइड में, ये साइड में लक्ष्मी और भूदेवी, नीचे घना है सर शिव का। ये विष्णु भगवान का रूप है सर, वो शिव का रूप। और सिर में देखे सर, विष्णु भगवान को मुकुट रहते सर, मुकुट, किरीट मुकुट। यहाँ पे देखिए सर थोड़ा मुकुट जैसे बना है, ये साइड में लेफ्ट साइड में, वो साइड में थोड़ा जटा जैसे बना है सर, मतलब शिव को जटा रहता है इसलिए जटा जैसा है। हरी हरा दोनों मिक्स करके मैसेज देता है, सर्वधर्म समभाव करने के लिए एक मूर्ति का एक मैसेज, ऐसा मूर्ति बना मैसेज दिया। सर यहाँ पे थोड़ा रामायण स्टोरी है, दशरथ महाराज कई के रामा सीता लक्ष्मण है सर। कई के ने कहा रहे राम दशरथ महाराज को राम को वनवास भेजने के और भरत का राज्याभिषेक करने के लिए। इधर दशरथ महाराज चिंता देखिए ऐसे सोच रहे, चिंता करके बैठे और बाद में आशीर्वाद करके राम को भेज दिया सर, वनवास भेज दिया। इधर आशीर्वाद कर रहे देखते। और नेक्स्ट राम सीता लक्ष्मण वनवास जा रहे थे सर, वो अयोध्या से पंचवटी फॉरेस्ट को जा रहे थे। बीच में एक नदी आती सर, नदी में ये बोट के लिए इधर वेट कर रहे सर, नदी के किनारे पर वेट कर रहे राम सीता लक्ष्मण। बाद में बोट चालक का गुहा ने मदद कर दिया सर, इधर नदी पार कर देते सर, बोट जैसे है बोट है, नदी पार कर दिया। बाद में गुहा के आशीर्वाद करके राम सीता लक्ष्मण वन में निकल जाए। सर ऊपर इधर अर्धनारी नटेश्वर है, अर्धनारी नटेश्वर हाफ शिव और पार्वती रूप है सर। इस साइड में लेफ्ट में पार्वती का रूप है, वो साइड में शिवा का रूप है सर। हरिहरा सॉरी अर्धनारी नटेश्वर। और यहाँ पे थोड़ा मिथुन गणपति रोमांटिक कपल्स बना सर, दोनों पिलर में, वो इधर एक इधर एक सर। वो बाकी टेम्पल में पूरा रोमांटिक कपल्स ज़्यादा है सर टेम्पल में। Now, though dedicated to Surya, that is Shakti, the temple is now named Durga because a Durga or a 44 lookout was constructed on top of it after 13th century. So there was a fort before 13th century. On top of it, it was built, and that was in the Hindu dynasty. Subsequently, it was taken over by the Muslims, and some of the temples were changed to their military base, like Lat Khan temple, and so this temple was also to certain period under the Islamic Sultanate. The rebels looked out survival to 19th century when the site was rediscovered. Actually, the site was totally ruined. If you can see the photographs of earlier days, you can really appreciate how good work archaeology department has done for this temple. Now Durga temple is the most prominent attraction in Aiholi for tourists and scholars. Maybe because of the building shape, it resembles the parliament or otherwise. Now it's a part of pending UNESCO World Heritage, and it will shortly be approved, or by the time you will hear this lecture, see this presentation, it might have been accepted by UNESCO as a World Heritage. Very shortly it will be. Now the temple derives its name from Durga Devi, and Gudi means temple. A Durga Gudi means Durga temple, meaning temple near the fort. Durga temple, Gudi temple, meaning a temple near the fort. It was dedicated to Lord Vishnu. The temple appears to be Hindu adaptation of the Buddhist Chaitya Hall. If you see the curvature, that is a curved structure,
it is an excellent adaptation. As we have seen, the temple has got different varieties because they have adapted different structures. Not only North Indian, South Indian, but also there is continuous development going on. That's why the Tadakal was called as, or the Aiholi is called as laboratory. There are a lot of experimentation have carried out, and if you see all around the town, you'll see a lot of temple in different styles and constructions. The temple appeared to be Hindu adaptation of the Buddhist hall, but that is a adaptation part. They have taken the ideas and both resemble in that way. Standing on a high platform with a Rekha Nagara. Rekha Nagara, what is Rekha Nagara? It's a Shikha style. When you can draw a line, Rekha Nagara, Rekha is curved line. You can draw a curved line from Shikhara downs. That's why it is called a Rekha Nagara style. And its most elaborative decorated monuments in Aihole. You will see it is really beautifully decorated. We are going to see it in the photographs. The column at the entrance and with the porch are carved with figures and ornamental reliefs. The temple appears to be a late 7th or 8th century constructions. The temple has been dated between 7, as we have seen just now, 7th to 8th century. Then it was used by somebody else later period, and when it was used as a military base, and that's why there is a temple called Lad Khan temple also in the same complexes. But the main development was by the Chalukyas. The scholars of Indian temple archaeology found an inscription in 1970s stating that the temple was originally dedicated to Surya, that is Shakti. On paleographic grounds, the inscription cannot be later than 700 CE. So it was dated to 700 when they have stated that this was a Surya Mandir. Now, part of the Durga temple has been damaged, including the artwork. Some panels are missing. For others, the iconography perhaps identifies the identity of the deity and depicted themes. Now, how to identify deities? One is from the vehicle. The vehicle of all gods are different. Number 2, what are the Dwarapalas? What is the type of associated deities? That is the Parivara temples. All these things tell you of which god the temple is. There are different extensive lecture on iconographic identification of different gods and different symbols. I'm sure you will visit them. The major artwork are found on the entrance pillar, that is Mukha Mandapa pillar, first 2 bays of the ambulatory, and some of the panels are upside ambulatory, that is the Pradakshana Marga. The outermost pillar towards the upsidal section are plain. As the devotee enters the temple, he or she finds a Dwarapalas. Now Dwarapalas is another indication of the deities, along with scenes of the Artha and Kama, that is Mithunas, then erotic couples. It was considered as a part of routine normal life, so they have carved it. The everyday's life is carved on the pillars. Everyday's incidences are carved on the pillar. Everyday's idols are carved on the pillar. So it is one of the way of public communication, and that is all seen in the Mukha Mandapas, but never in sanctum. They are all on outer walls. Now below the base of the porch and the mandapas are the smaller panels that contain scenes from the Hindu epics Ramayana. This is one of the universal thing in Chalukya temples, that you will see lot of incidences from Ramayana, and the best is Pattatkal. Do visit our Pattatkal videos and you will get how beautiful they are carved in temples. Now Mukha Mandapas has got a door frame and it has got 6 shakhas, that is concentric branch of artwork. Artwork is in 6 branches. These are Nagara, Wali, Stambha, Mithuna and Bahya style decorations. So these are the different styles.
in which the decorations are made. At the base of the door frame are the goddesses Ganga and Yamuna. Ganga stands for purity and Yamuna stands for wisdom, with a traditional attendance. As you get closer to the sanctum, the artwork shows deities. Now see how the changes are taking place. First, a common man. Then are the Dwarapalas. And now here you are finding a deities. Now deities are along with their dharmic themes and scenes. The majority of Dharma panel are in ambulatory passage. So they gives you the idea that certain things you will have to keep at certain place only. Beyond that, it is different. And these include, along with the traditional Hindu style, clockwise circumambulatory. You take the rotation around the temple in a clockwise manner. That is parikrama. Now this is the architectural design of the Durga Mata. You can see this is the sanctum. Inside sanctum also there is a space, but it was not for common people. Common people can go only up to here. So their parikrama marga was, this is the one, and the second is from outside. These are the two parikrama margas path. Now after seeing this, let's get in details of the temple. First we'll see it exteriorly, then we'll see parikrama marga, and then we'll see the garbhagriha and remaining things. This will be the way in which the presentation is made. Now we are outside. Now outside it resembles a parliamentary hall. So some people say that the design is taken from it, but you will find a lot of temples on this base. Some are the half circle or some are the total. This type of temple are also called Gajaprushtha because of their shape. It resembles elephant back. This is the surrounding temple complex. It is very neatly kept. It is kept very clean, nice, and there are guards watching it. Now, this was a very early morning. We were there right at the sunrise. We are going closer. Now these are all outside views. After that, we'll be seeing from inside. Here are also carvings. This is a right side wall if you face the temple. And what is the curvature? As you can point out, wherever there is a shikhara, that is Rekha Nagara style, there has to be a sanctum below. And in front are the Sabha Mandapas. There is excellent restoration work done by archaeology department. If you can see earlier photographs, they are available on the net, taken around 100 years back. You can appreciate their work. They are really done well. And most important thing is they have kept the patterns same. So great work by engineers, designers and archaeologists. Now here you are seeing carvings. Now this is the main temple and this is a small structure as a Pravesha Dwara. From here it was supposed to be a Pravesh Dwara. It's not a temple, but it is a place from where you can come inside. So here three things you will get. One thing is the temple, second thing is the Pravesh Dwara, and in front of it is the museum. So Pravesh Dwara is important. Earlier it was Pravesh Dwara, then they have converted it or changed it to the Gopuram. Gopuram is a large structure mainly developed by Cholas. There are few steps you will have to climb before going into the temple. These are from the side, and this is one of Amalakha. Amalakha should be on the Shikhara or in the museum, but it's here. Now, how the carvings are arranged, it is interesting to know. You are going to enter from this side. Okay, steps up, then this is a Garbhagriha. Deity will be here. Now, if you are coming from the circumambulatory path, that is a parikrama, there is first is a missing, second is the Shiva and Nandi. We are going to see it in photograph also. Here it is Narasimha, that is the reincarnation of Vishnu.
Then here it is Vishnu with Garuda. Here again it is missing. Then this is Varaha avatar of Vishnu. Then his Durga when she has killed a demon. And here it is Harihara. Hari and Hara. That is a combination of Shiva and Vishnu. So these are the pictures of the, or these are the sculptures of the god, and that we are going to see deities, and that we are going to see also in photographs. Now here there are secular themes, that is the Mithuna couple, that is the common man, and there are certain on the pillars they are carved certain things. These are the designs. We are taking a parikrama marg. From left side we are going towards the right, and we are seeing a lot of sculptures, good designs. It is aerated because you can get good sunlight. The basic idea of showing you each and every photograph is each and every carving you can appreciate over here. If you want to know details of it, certain things I'll be telling you, but lot of things you can excavate by yourselves. And there is also a message written. You can see it in old Kannada inscription. So these are important because all information we get about these is from the inscription. And I have talked about this inscription when we were at the early lecture, in beginning of the lecture. Though many of these are ruined, still we can make out that they were really beautiful, and the efforts taken by the artsman. Beautiful carvings. Many of them are from the common man, common life. Some of them are Ganas. These are the dwarfs. Now this is Mahishasur Mardini. The buffalo was a demon, Mahishasur, and she has killed it. Already we have, at beginning I have given you which sculptures we are going to see. This is Varaha Avatar, Vishnu Avatara, reincarnation of Vishnu. He has saved Mother Earth. Now we have come to the another end of parikrama. This is same a close look up of Varaha Avatara. If you see in detail the Vishnu Avataras, you will find that the evolution of human beings, right? The life originated from the sea, then from sea and land, and then on the land, then how the agriculture started, how the Vijnana Yuga has started. All these things you can get in the Vishnu Avatara. This is beautifully depicted in Hampi. When you will see our Hampi videos, you will definitely watch all these things. Many sculptures were given or shown in different angles. Whenever you see Nandi, it has to be Vishnu. This is the sanctum. On either side of the sanctum, you will get designs, carvings, and also dwarapalas. On either side of the door, you will see a dwarapalas. All we have shown in details, from longer snaps, so also close-ups, to give you an excellent idea or to give you a virtual picture of how the carvings are. These are now close-ups. As we told you, there are Ganga and Yamuna. Ganga as a purity and Yamuna as a wisdom.
Now inside is the sanctum, and the gross diagram we have shown you in the map. This is slightly from the distance so that you can see on either side how they are. Now these are the Amalakas, which has fallen from the Vimana, South Indian word, or Shikara, North Indian word. Both mean same. Above the Amalaka is usually Stupi or Kalasha. With that, we are coming to end of our small presentation. I'm sure I have tried to convince you in best possible manner how the things are there. Even though you have not gone there, you can have a fairly good idea with the three-dimensional views, close-ups, long shots, that what should be there. But one thing is very sure, to see yourself by going there and to see it in a photo are totally different. Do visit the site, but when you visit the site, have a proper orientation what you are going to see. And these videos, I am sure, will help you. Thank you, goodbye, and take care.